Hello students, continuing in the chapter of current electricity, let us discuss in today's lecture various aspects of ammeter, voltmeter and potentiometer. Before we move ahead, first understand that in practical life, we happen to manufacture galvanometer. Practical life में galvanometer की manufacturing होती है. In your subsequent chapters, you will be talking about moving coil galvanometer, etc. मैन्युफैक्चरिंग गैल्वेनोमीटर की होती है whose resistance is approximately 10 ohm. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप करंट मेजर कर लेते हैं. इट्स अ डिवाइस which will be telling you what amount of current is flowing into this. Now, depending on your purpose, either you can use it as ammeter or you can use it as voltmeter. आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं और चाहें तो इसको वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं. जनरली एमीटर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसकी रेजिस्टेंस लेस है. द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 ohm एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इन किलो ओम. एमीटर लो रेजिस्टेंस का है, वोल्टमीटर हायर रेजिस्टेंस का डिवाइस है. दैट मीन्स व्हेन you will be converting galvanometer into ammeter, your concentration will be on this fact that the resistance of galvanometer should be reduced. But if you want to use it as a voltmeter, then your concentration will be on this fact that its resistance should be increased. जब आप galvanometer को voltmeter की तरह यूज करेंगे, then its resistance value should be increased. So this is the basics, that a galvanometer is the main device which is either converted into ammeter or voltmeter depending on our requirements. You understand? Now in this lecture we have to study the different aspects of ammeter and voltmeter in the background of galvanometer. You understand? Now let us discuss the various aspects of ammeter. As the name suggests, it is a device to measure current. It's a device used to measure electric current. Consider a situation in which through a resistor whatever amount of current is flowing, you are expected to find that. Imagine a situation that you have a resistor R connected to a voltage source and current I is flowing into this.
Now you see here that in case the current is to be measured, then the entire current should pass into a device which will measure it. So the ammeter is connected in series to the resistor through which the current is flown. इस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको मेजर करने का हमारा मेथड ये होगा दैट एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर थ्रू विच यू वांट टू मेजर द करंट. सो द फर्स्ट थिंग, you are learning here is that ammeter is connected in series to the device through which you want to measure the current. Now see, ammeter will have certain resistance, isn't it? Ammeter cannot be a device which has no resistance. Ammeter एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होगी. The total resistance of the circuit now is no more capital R. Rather you can see that ammeter, in case it has some resistance, say RA, then the total resistance of the circuit has increased. पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस नाउ R होने की बजाय उससे ज्यादा हो गई है. दैट इज वाई द करंट जो आप मेजर करना चाहते थे एंड द करंट विच इज बीइंग मेजर्ड, दे हैव बिकम डिफरेंट. Current being measured is I dash. Current being measured is I dash, which is EMF upon R plus RA. By RA we mean the resistance of the ammeter which you have connected. But current ideally to be measured was this I. जो करंट आप एक्चुअली मेजर करना चाहते थे, दैट इज I. एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? इसकी वैल्यू E by R होनी चाहिए थी, isn't it? You can clearly see from the circuit that current E by R was to be measured, but current actually being measured is slightly less. करंट जो आप मेजर कर रहे हैं उसमें थोड़ी एरर आ गई है. द एरर हैज कम बिकॉज दिस एमीटर इज ऑफरिंग सर्टेन रेजिस्टेंस ऑफ इट्स ओन विच हैज बीन शोन बाय RA. यू सी दैट इस एमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट की मेजरमेंट में एरर आ गई है, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही लेस होनी चाहिए. इफ यू वांट दैट द एरर इन द इंटायर मेजरमेंट शुड बी वेरी लो, देन आइडियली द एमीटर शुड हैव नो रेजिस्टेंस. बट प्रैक्टिकली नो रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई भी ऐसा एमीटर नहीं मिल सकता जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना. सो practically you make it a note that the resistance of ammeter should be as low as possible. This fact we are writing here. Ideally ammeter has zero resistance
Ideally, ammeter has zero resistance. Practically, it has very low resistance. Practically, it has very low resistance. You understand? These are the main points that this ammeter is being used to measure the current. For measuring the current, it should be connected in series. एमीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा. किसके सीरीज में? जिसके थ्रू करंट मेजर करना है. देन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ यू वांट टू कीप द एरर मिनिमाइज्ड, देन प्रैक्टिकली द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो. एमीटर की रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली बहुत ही कम होनी चाहिए. आइडियली अगर लिखा हुआ हो कि एमीटर आइडियल है, इफ इट इज रिटन दैट ammeter is ideal, then you have to understand that it has zero resistance. Ideal ammeter का मतलब हुआ it has zero resistance. You understand? Now, as we said that a galvanometer is converted into ammeter. Now, let us see how that galvanometer can be converted into an ammeter. Now, let us see how to convert a galvanometer into an ammeter. If you remember, we said that a galvanometer has slightly larger resistance. A galvanometer is a device of, you can say, approximately 10 ohm. Galvanometer की resistance 10 ohm के आसपास होती है. And in case you want to convert into an ammeter, then you have to keep this thing in your mind that आपको इसकी रेजिस्टेंस लेस करनी है, बिकॉज एमीटर की रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 ओम के आसपास है एंड गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 10 ओम के आसपास है. सो जो भी कन्वर्जन का हमारा प्रोसेस होगा उसमें हमें गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को लेस करना है. व्हेन यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, it becomes an ammeter. Now, the common method is that you connect a very small resistance in parallel with the galvanometer. Here S stands for a very small resistance, which is also called shunt. You understand? जो स्मॉल रेजिस्टेंस आप गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसको शंट भी कहते हैं. और यहां की सिचुएशन ये कहती है दैट व्हेन अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इनटू गैल्वानोमीटर, देन द इंटायर सेटअप बिहेव्स लाइक एन एमीटर. पर्पस हमारा ये था कि इसकी रेजिस्टेंस को हम लेस कर दें. सो मेथड इज बाय एडिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, also called shunt, in parallel
to the galvanometer. You understand? This is the method that एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे, देन इट शुड बिहेव लाइक एन एमीटर. नाउ लेट अस चेक दैट वेदर दिस हैज रिड्यूस्ड इट्स रेजिस्टेंस और नॉट. अगर आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, देन अगर आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, देन इट विल बी सिंपली टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल. उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इजंट इट? हियर आई विल बी राइटिंग इट एज RG stands for resistance of the galvanometer, RS stands for resistance of the shunt. In case these two are connected in parallel, then the equivalent resistance has become like this. And it was also said that resistance of the shunt is very small compared to the resistance of the galvanometer. It is given to you. Now you see, in this expression, I can successfully neglect this resistance of the shunt in comparison to this resistance of the galvanometer, because they are being added. जब आपने इन दोनों का यहां सम दिखाया है, तो आप चाहें तो इस शंट के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच ये इंटायर एक्सप्रेशन, दिस इंटायर एक्सप्रेशन विल बिकम RG into RS upon RG, isn't it? And now what do you see? Now you see that these two can be neglected. This has become the resistance of the shunt, and that in itself is very small, and this becomes now the resistance of the ammeter. We were trying to check whether by adding a very small resistance shunt in parallel to the galvanometer, will it be making an ammeter? Answer is yes, because by doing this you have overall reduced the resistance of the entire contraption. पूरी चीज का रेजिस्टेंस लेस हो गया है, और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी एमीटर की. प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज कैसे अचीव होगी? जो भी गैल्वेनोमीटर का बॉक्स है, उसके अंदर पैरेलल में आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, विच यू कॉल शंट, एंड नाउ यू कैन यूज इट एज एन एमीटर. नाउ रिमेंबर दैट द मैनर इन विच वी हैव कन्वर्टेड अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, उसी मेथड को यूज करके आप चाहें तो एमीटर का रेंज भी इंक्रीज कर सकते हैं. द मैनर इन विच a galvanometer has been converted into an ammeter, the same method can be used to increase the range of an ammeter, and that will be our next discussion. Now try to see, once you have already made the ammeter, then how to increase the range, of an ammeter. How to increase the range of an ammeter. Situation की meaning ये है that let us suppose you already had an ammeter who can measure current up to 5 milliampere.
लेट अस सपोज आपके पास ऑलरेडी एक एमीटर है जो 0 से 5 मिली एम्पियर तक कोई भी वैल्यू मेजर कर सकता है, बट द करंट विच इज कमिंग इनटू द सर्किट, लेट अस सपोज वो 50 मिली एम्पियर तक का हो सकता है. लेट अस सपोज द मैक्सिमम करंट which can come, that can be having a value anywhere between 0 to 50 milliampere. Now what is the problem? Problem is, अगर आप इस पूरे करंट को इस एमीटर में इंसर्ट करेंगे तो ये एमीटर डैमेज हो जाएगा. दिस एमीटर विल बी डैमेज्ड in case you supply 50 milliampere into this ammeter, because its range is 5 milliampere. और मे बी इवन इफ इट इज नॉट डैमेज्ड तो इसकी नीडल जो है बिल्कुल राइट में जाके फिक्स हो जाएगी. बियॉन्ड 5 इट विल नॉट बी गोइंग. नाउ बियॉन्ड 5 मिली एम्पियर वट एवर अमाउंट ऑफ करंट यू आर फ्लोइंग, लेट अस सपोज 10-20 मिली एम्पियर, it will be showing only 5 milliampere. You understand? So the correct measurement of this current is not possible with this ammeter. Now you see, the technique we use is that whatever extra current is coming, extra means maximum 5 milliampere should come into this, but more than 5 whatever is coming, that should be bypassed with the help of a small resistance connected in parallel to this ammeter. Right now I can say my need is or aim is to increase the range of ammeter n times. For example, in this case, we are interested in increasing the range of this ammeter 10 times. Why 10 times? Because ammeter can at the most measure 5, but you are interested in measuring up to 50 milliampere. That's why 50 by 5, that is n times you have to measure. Now, what will be the situation? Situation will be that whatever extra current is coming in, that is in this case 45 milliampere, isn't it? Say 5 milliampere at the most is coming here and 50 milliampere is the main current, then 45 milliampere has to be bypassed. Call this resistance to be S. It's a very small resistance. Now see, whatever is the current possible here, you see, whatever is the current possible here is Ig. Whatever current was coming here, that is, let us suppose I. This I minus Ig, this I minus Ig will be coming here. You understand? Or in true sense, you must say that this is Ig, then this current is n times the current which should pass through this ammeter or galvanometer. You may say this is equal to n times Ig. Whatever current is going into this galvanometer or ammeter, n times that is flowing into the main circuit. This is n is the range through which you are trying to increase this. So this is nothing but n minus 1 into Ig. You understand? I is Nig minus this Ig. This is equal to n minus 1 into Ig. Now maybe things are appearing very complicated. चीजें complicated लग रही होंगी, but remember that ammeter की conversion, ammeter की increasing the range is simply आपको ऐसा करना है जैसे कि दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों और उनकी मैकेनिज्म पे सोचना है. यू हैव टू थिंक दैट इट इज जस्ट टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाट आर दोज टू रेजिस्टर्स? वन रेजिस्टर इज दैट इज ऑफ एमीटर,
another resistor is that of resistance of the small resistance you have connected here. Generally questions में हम ये पूछते हैं कि what small value of resistance you should connect in parallel to the ammeter so that it can increase the range. You understand? Now you see here, this circuit and this circuit, they are in parallel. So whatever will be the potential drop here, same potential drop will be here. Try to tell me what is the potential drop here. Potential drop here is, I am trying to say potential drop across ammeter is equal to potential drop across S. Whatever is the potential drop here, same is the potential drop across S. What is the potential drop here? This is the current multiplied by the resistance. Resistance of ammeter is RA, let us suppose. And what is the potential drop here? Potential drop here is I. What is the current flowing there? यहाँ पे क्या current flow कर रहा है? Here the current flowing is n minus 1 into Ig. n minus 1 into Ig multiplied by the resistance of this small resistance you have connected. RS I am denoting. You understand? Now this Ig is cancelled, and this gives you an important formula that RS will become equal to RA upon n minus 1. What is the meaning of this? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप एक एमीटर की रेंज n टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं, n टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब n टाइम्स करंट की शोइंग ये अगर करे, तो आपको पैरेलल में, एमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा. यू हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस RS, जिसकी वैल्यू एमीटर के रेजिस्टेंस को n-1 से डिवाइड करने पे आती है. द रेजिस्टेंस विच विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल RS, that will be RA upon n-1. You understand? So what is the conclusion or method? Method is, if you want to, if the range of an ammeter, if the range of an ammeter is to be increased n times, then a resistance RA upon n-1 should be connected in parallel to the ammeter. Here, for your sake of convenience, I am writing that RA stands for resistance of the ammeter whose range you wanted to increase. Is it clear to you? The summary of this discussion is that in the question it is given that if the range of an ammeter is to be increased n times, अगर एक एमीटर की रेंज n टाइम्स अगर आपने इंक्रीज करनी है, then a resistance RA upon n-1 should be connected in parallel to the ammeter. अगर आपको रेंज n टाइम्स इंक्रीज करनी है तो एमीटर की जितनी रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय n-1 शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द ammeter. We can ask few numerical questions on this, but it is simply formula based. ये चीज आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. प्रैक्टिकली
क्या होगा प्रैक्टिकली, व्हाट विल हैपन इज दैट आफ्टर सच मैनिपुलेशन, इस तरह से एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद यू कैन सिंपली चेंज द डायल ऑफ दिस. जहां पहले 5 लिखा हुआ था वहां आप अब 50 लिख देंगे, एंड वट एवर वैल्यूज इट विल बी गिविंग मे नॉट बी दैट मच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू एमीटर. जो ये बता रहा होगा, जो ये रीडिंग शो कर रहा होगा, उतनी करंट इसमें जा नहीं रही है. हमने कुछ करंट को बाईपास कर दिया है सो दैट इट इज नॉट डैमेज्ड, बट मेन सर्किट की करंट उतनी ही होगी जितनी की ये शो करेगा. लेट अस सपोज इन दिस एग्जाम्पल आपने इसका रेंज 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, देन रिमेंबर दैट इफ इट इज शोइंग जस्ट 2 मिली एम्पियर, इसका मतलब हो गया कि यहां पे मेन सर्किट में 20 मिली एम्पियर फ्लो कर रही होगी. बाकी की 18 मिली एम्पियर, बाकी की 18 मिली एम्पियर बाईपास कर रहे हैं, एंड ये आपको वो रीडिंग बताएगा जो यहां पे फ्लो कर रही होगी. यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ वोल्ट मीटर.